So, beta, I'm going to quickly revise hydrogen beta and what type of question they will generally ask in exam. Okay, so first I'm going to show you this beta, which we have already done. एक एक करके सब गिव रीजन बताते जाता हूँ, सुनते जाओ बेटा. First of all, they will tell you what is hydrogen. So it is water producer. Then beta, we have studied hydrogen can be placed in group 1 alkali metal or group 17 halogen. So in exam, they will ask you why it can be placed in alkali metals. Then what will say beta? They have same valence electron. If you see the electronic configuration, sodium it is 281, hydrogen is also 1. So they have same valence electron. Hey, this will also lose one electron, so this can also lose. So plus one, so both are univalent. So therefore it is placed in what group 1. Then again they will ask you why it is placed in group 17. So look beta, group 17 mein chlorine is there. And who is the nearest noble gas? Argon. So chlorine is 287 and this is 288. So it has how many electron less than the nearest noble gas? Only one electron less. Similarly, who is the nearest noble gas to hydrogen, helium? So it has how much electron less? Beta, one electron less. So they both of them have one electron less than the nearest noble gas. Therefore, it is placed in what beta? Group 17. Acha, now since they have beta, can you see beta halogen? So it will gain one electron. Similarly, hydrogen will also gain one electron. So their valence is what beta? 1 minus. Both show valency 1 minus. A hydrogen with negative 1 is known as what beta? Hydride. Hydrogen with negative valence is known as what beta? Hydride. In nature, chlorine is Cl2Br2. Hydrogen will be also what beta? H2. So both are diatomic. Then beta, they will ask you give reason related to और how what type of question they will frame. Name a monovalent metal. देखो बेटा पहले के तीन करीना एंड कार they react with cold water because they are above in the reactivity series. But in exam में what they will ask you name a monovalent metal. In exam what they will ask you beta name a monovalent metal which reacts with hydrogen cold water sorry with react with cold water to give hydrogen. तो monovalent metal कौन है? Potassium. Look this water is cold and they form corresponding hydroxide. या highly reactive metal कौन है? Carina and car. Okay, so they release hydrogen. But I cannot use this method for preparation. Why? Because the reaction is highly exothermic and the liberated heat will ignite the hydrogen. Then they may ask you name a monovalent metal which reacts with cold water. So either you can write potassium or sodium. But sodium will react. But what they will ask you observation. Write your observation when sodium is added to cold water. So beta it will melt into globule and dart on the surface of water. And collection of hydrogen becomes difficult. So what we do? We wrap a wire gauze. Why a wire gauze is wrapped around the sodium? So that the collection will not become difficult. Name a divalent metal which react with cold water. So what you are going to write? Calcium hydroxide. Calcium will react with water to give you calcium hydroxide and hydrogen. But why we don't use this method? Because calcium is very expensive. So these three beta give reason they may ask beta. So look in your textbook, if you see, it is here beta. On page this one, 97. Can you see beta this? Give reason they may ask. Why potassium is not used? Can you see cold water, sodium? It melts into glue. Write your observation when sodium is added. Therefore, it is wrapped in wire gauze. Give reason. Okay. Then calcium divalent metal. Again, cold water. It gives hydroxide and hydrogen, but it reacts slightly only, yeah, beta vigorously. And it is expensive. Then beta in exam, they will ask you, name a metal which reacts with boiling water. बॉइलिंग वाटर के साथ बोलेगे तो कौन है? मैग्नीशियम. नाउ बेटा मैग्नीशियम ऑनवर्ड दे विल गिव यू ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, नॉट हाइड्रोक्साइड. दे विल गिव यू ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन. So now look here beta, if I take magnesium and divalent metal which react with boiling water, boiling water this is, so it will give you magnesium oxide and hydrogen. Name a trivalent metal which react with steam. Abhi dekh beta, these elements are below reactivity series, so therefore we have to use steam. It will give you aluminum oxide and hydrogen. Divalent metal which react with steam, then you will write answer zinc. But divalent metal with boiling water, then you'll write what? Magnesium. Will give you zinc oxide and hydrogen. बेटा कल ये एग्जाम में आएगा ये Fe वाला रिएक्शन. This is very very important. Name a trivalent metal which react reversibly. Then it is Fe. Balancing also you see properly. 3, 4 and here it is 4. Fe3O4 is known as magnetic oxide of iron. Clear? ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सेम पेज पे बेटा आ जाओ बेटा. यहाँ पे देखो ना बेटा, यहाँ पे क्या था? बॉइलिंग वाटर, स्टीम, स्टीम. एंड दिस रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट.
It is reversible. Can you say? Then beta, they will ask you one give reason. Why potassium, sodium and calcium is not used to prepare hydrogen with dilute acid? करीना एंड कार से हम लोग हाइड्रोजन नहीं बना सकते बाय यूजिंग डाइल्यूट एसिड. व्हाई? बिकॉज रिएक्शन इज वेरी वायलेंट एंड प्रैक्टिकली नॉट फिजिबल. तो फिर अभी कौन से मेटल बचे? मंगल जिंदाबाद फीलिंग. हु आर मंगल जिंदाबाद फीलिंग? एक्टिव मेटल. मंगल मीन्स मैग्नीशियम, अल एल्यूमिनियम, जिंदाबाद जिंक एंड फीलिंग. They will react with dilute HCl or H2SO4 to give you salt and hydrogen. Can you see beta? They are giving hydrogen. Now, if you see beta, lead is above hydrogen in the reactivity series, but we cannot use, lead. Why? Give reason why lead is not used with dilute acid. Because, देखो बेटा ये रहा. Give reason मैं बता देता देखो. Look बेटा, if I take lead, it will react with HCl and it will give you hydrogen. Look, it will give you hydrogen. But बेटा, they form lead chloride and lead sulfate. These are insoluble coating. तो ये lead के surface पे ऐसा they will form the coating. So now my dilute HCl or H2SO4 won't be able to see lead, and therefore reaction stops. So what you will write answer? Why lead is not used? Because due to the formation of insoluble coating of lead chloride and lead sulfate on the surface of lead, which stops the reaction. Now one more important question they will ask. Why we have used only dilute HCl and H2SO4? Why we have not used nitric acid? So beta, nitric acid also reacts, but the problem is what beta with nitric acid? It is a strong oxidizing agent. So what it will do beta? Look beta. Nitric acid, by nitric acid, dilute nitric acid is not used. Beta, look, it will react. It will give you a hydrogen. But nitric acid is a strong oxidizing agent. It decomposes to give you nascent oxygen. Now this nascent oxygen will react with this liberated hydrogen and it will oxidize it to water. तो देख हम लोगों ने मेहनत से हाइड्रोजन बनाया था ना, हाइड्रोजन पानी में कन्वर्ट हो गया. So how to write this answer? Have you understood? Okay, with dilute nitric acid beta, it will react, but it will form what beta? Dilute nitric acid is a strong oxidizing agent, decomposes to give you nascent oxygen, which oxidizes hydrogen to water. This one more important question they will ask. Name two metal which can react with very dilute nitric acid at low temperature. Name two element which can react with very dilute nitric acid at low temperature. Then answer is what beta? Magnesium and manganese. Why they will react at low temp? Why with very dilute? Because on dilution, oxidizing property of nitric acid is reduced. Clear? Okay. Then beta, which are amphoteric metal? Janabe Ali in pub. Zinc, aluminium and Pb. Zinc, aluminium and Pb. Now, what question they will ask? Beta, zinc, aluminium and Pb, they can react with NaOH or KOH. Huh? ये अल्कली बोलते हैं इसको बेटा. Hot and concentrated NaOH and KOH. So when beta the zinc, whenever it react, it will give you sodium zincate and hydrogen. If you take lead, it will give you sodium plumbite and hydrogen. Now this reaction is very very important. Whenever aluminium ka they will give you beta, because whenever beta they give you aluminium, you have to always add water also. Can you see? And you get sodium aluminate and hydrogen. Now in exam I can ask you one more question. Name a metal which reacts with water also, acid also, and alkali also to give you hydrogen. So what will be your answer beta? It will be what beta? Water के साथ भी react होता था, alkali के साथ भी react हो रहा था और acid. So answer is what beta? Zinc and aluminium both. Look, zinc and aluminium, they are reacting with what beta? Can you see this? Alkali. They are reacting with what beta? Acid also. Okay, ये देखो, zinc and aluminium. And they can react with what beta? Steam, water also beta. Zinc and aluminum, they react with water also or not to give you hydrogen. Clear? Right? Hey, instead of NaOH, if I use KOH, then what I'll get? Instead of sodium aluminate, I'll get what? Potassium aluminate. This aluminum वाला रिएक्शन में याद रखना अपने को वाटर ऐड करना पड़ता है, यहाँ पे वाटर नहीं है. Clear? So these are the question beta. Look, give reason. In your textbook beta, if you see, this was your 97. Then this is on page number 98 beta. Why potassium, sodium and calcium are not used? Give reason. Why dilute nitric acid is not used? So this is the answer. Name two metal which can react with very dilute nitric acid, magnesium. Why? Because on dilution, oxidizing property is reduced.
Why lead is not used? Because it forms an insoluble coating. Then beta, they will ask you this question. Yeah, alkali wala. Can you see this? Whenever you use aluminum, you have to use H2 also. Or they will say convert zinc into sodium zincate, convert Pb into sodium plumbite, convert aluminum into sodium aluminate. Then beta, they will ask you this question also, beta. Why copper is not used with dilute acid? Because copper is below reactivity series. Can you see it is below hydrogen? So copper cannot displace hydrogen. So you will write since because copper is below reactivity series, so it cannot displace hydrogen from HCl. Clear? Yes, Then sir. beta laboratory method. Laboratory method mein beta what all question they will ask. Listen carefully. Okay. Diagram based question can also come. Instead of this, I'll give you A. Instead of this, here. Instead of this, I'll give you B. Here. Instead of hydrogen, I'll give you C. So you have to name it. So you zinc granules, you'll write dilute HCl or H2SO4. Okay. And here hydrogen gas. Now, first of all, beta, what all question they will ask? Why we have used zinc granules only? Because it contains impurities of copper which has a catalyzing effect. Why we have used dilute HCl or dilute H2SO4? Why not nitric acid? Because nitric acid is a strong oxidizing agent. It will oxidize hydrogen to water. Okay. Why lower end of the thistle funnel should be immersed into the acid? Otherwise, if it is not immersed, then what will happen? Hydrogen may escape through the thistle funnel. In this entire experiment, beta, all the apparatus should be airtight. Why entire apparatus should be airtight? Because if there is a leakage, then hydrogen form explosive mixture with air. Why we have collected hydrogen in water only? Because hydrogen is practically insoluble in water. Okay? And it can form explosive mixture with air. फिर बेटा यहां पर भी बोलेगा देखिए वाटर नीचे चला गया बेटा हाउ हाइड्रोजन इज कलेक्टेड तो व्हाट विल से बेटा इट इज कलेक्टेड बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर व्हाई बिकॉज इट इज लाइटर देन एयर लाइटर देन वाटर no flame should be brought near to this apparatus why because if hydrogen will leak it will catch fire अच्छा और एक important question है बेटा here when we are using granulated zinc so we have kept here three washer bottle this is washer bottle 1 washer bottle 2 washer bottle 3 and here we have kept one U tube also so what happens बेटा when you take zinc granules उसके अंदर impurity होता है so it will not only form hydrogen it will form what बेटा arsine and phosphine then to remove that, what I'm going to use AgNO3 solution. Solution word लिखने का वरना marks जाएगा. Then I'm getting hydrogen sulfide also. Hydrogen sulfide को निकालने के लिए what we use lead nitrate solution. If you don't write solution, you will lose marks. Then beta we have CO2, NO2 and SO2. ये गैस कौन निकालेगा बेटा दिस इसके लिए हम लोग ने क्या यूज किया है KOH solution, caustic potash solution. Then beta we have moisture also. So in order to remove moisture, what we have used here? Anhydrous calcium chloride. And then beta we get what beta? Hydrogen gas. तो बेटा ये सब impurity चला जाएगा देख arsine is removed by AgNO3. Hydrogen sulfide is removed by lead nitrate. All these impurities, these three impurities are removed by whom beta? KOH. This will come in math column or MCQ. Water is removed by anhydrous calcium chloride. And what will move out beta from here? Pure hydrogen. Pure hydrogen यहाँ से जाएगा ऊपर. Clear? So now you say, sir, where all this thing is given, beta? Look here, beta. So they will ask, look, this you have to be very careful. Look, beta. AgNO3 solution removes arsine and phosphine. Lead nitrate solution removes hydrogen sulfide. KOH solution removes NO2, SO2, and CO2. Anhydrous calcium chloride remove moisture. How hydrogen was collected, what precaution and all we have given, beta. No leakage. Can you see? No flame. Right? Then, beta, lower end of the thistle funnel should be immersed. Then what is the method of collection? Downward displacement of water. Then give reason. All give. Our entire apparatus should be airtight. Give reason number 1. Okay. GR2. Why no naked flame should be brought closer? Why the lower end of the thistle funnel should be immersed? Give reason number 3. Right?
Give reason number 4. Why granulated zinc is used? Because it has traces of impurity which has a catalyzing effect. अच्छा, एक अलग से क्वेश्चन आ सकता है. What can be added to increase the efficiency of the reaction? तो traces of copper sulfate. Traces of what बेटा? Copper sulfate is added. Okay. Then give reason number 5. Why nitric acid is not preferred? Because it is a strong oxidizing. Give reason number 6. Hydrogen is collected by downward displacement of water. So you have to write it is almost insoluble in water, and if it is collected in air, then it will form an explosive mixture. Clear? Then beta, so this was all related to the preparation. बेटा preparation से related सारे question clear है. किसी को कोई doubt है तो पूछ सकते हैं. Hello. Then beta, they will ask Hydro. you which is name the industrial process. What is the industrial process? Name of the industrial. दूसरा हाँ बोलो. oh, Yeah, Arika, tell me what happened. had to fall. What? कुछ नहीं. Okay. कितने बजे तक है? I don't know. I Name the only want industrial to process or the commercial process in which by which the hydrogen is prepared. So what you'll write, beta? Boss process. What you'll write? Boss process. Then beta, they will ask you beta first question. Question number 1. In Boss process in step 1 beta, in first step, what is happening? We take white hot. Name the reactant used in first step. White hot coke. White hot coke means it is carbon and steam. How much temperature we are supplying? 1000 degree. And what product we are getting? Water gas and minus triangle. Huh? This triangle will it means first step is endothermic. In MCQ, I can ask you question. First step of Boss process. First step of Boss process is what beta? Endothermic. Okay. In first step, what is the product form? Water gas. Write the formula of water gas. CO plus H2. In step 2 beta, what we are going to do beta, you are going to take this water gas again and you are going to add excess steam. Now in step 2 they will ask you various questions. What is the temperature used? 450 degree. Who is the catalyst? Please, iron 3 oxide. Who is the promoter? Chromic oxide, chromium 3 oxide, Cr2O3. Second step is what beta? Exothermic. Clear? They can also ask you this question. In step 2, carbon dioxide is oxidized to what? Carbon dioxide. Clear hai? Right? And steam is reduced to what? So steam is reduced to hydrogen. Because removal of oxygen is taking place or not? Now beta, I want what? Hydrogen. But if you see my product side, what all thing I have got? मुझे सिर्फ हाइड्रोजन में इंटरेस्ट है. सो आई हैव टू रिमूव दिस. ये आएगा यहाँ क्वेश्चन बेटा. सो हाउ टू रिमूव कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाउ टू रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड. सुन लो अच्छी तरह से. You'll have to write properly for carbon monoxide by if you have to write up by dissolving the mixture in caustic potash solution. Caustic potash solution word नहीं लिखेगा तो मार्क्स जाएगा. For carbon dioxide. How to remove carbon monoxide? By dissolving the mixture into ammonical cuprous chloride solution. You'll have to mention that. Carbon dioxide is by dissolving the solution into caustic potash solution. Carbon monoxide by dissolving the mixture into ammonical cuprous chloride. Now industrial method beta, if they say electrolysis of water, so you will say acidified water you have to take. You pass electric current. Which gas is liberated at cathode? Hydrogen. Which gas is liberated at anode? Oxygen. But in exam, if they say if you want to prepare very pure hydrogen, then what you will say beta? Electrolysis of brine. Brine is what beta? NaCl. Dissolved in water is known as brine. So very pure hydrogen बोलेगे तो क्या लेंगे बेटा? Brine solution. What is brine? NaCl dissolved in water. Very pure. How hydrogen is prepared from natural gas? Natural gas means what beta? Methane. You pass steam, nickel 800 degree, you get carbon monoxide and hydrogen. How will you remove carbon monoxide? By dissolving the mixture into ammonical cuprous chloride. Calcium hydride, when added to water, you get calcium hydroxide and hydrogen. क्लियर. इसमें बॉस प्रोसेस आएगा बेटा और इलेक्ट्रोलाइसिस वाला पार्ट अच्छे से करना.
बॉस प्रोसेस अच्छे से करना। फर्स्ट स्टेप, स्टेप टू, रिएक्शन ऑफ बॉस स्टेप, कैटलिस्ट, प्रमोटर, राइट। फर्स्ट स्टेप इज एंडो, सेकंड स्टेप इज एक्सोथर्मिक। देन बेटा हाउ टू रिमूव CO2, हाउ टू रिमूव CO, बहुत इंपॉर्टेंट आएगा ही बेटा ऑन दिस पेज। बेटा वट एवर रिएक्शन वी हैव डन, एवरीथिंग का रिवीजन इज गिवन। अच्छा, यहाँ पे अभी आपको पूछेगा, हाइड्रोजन इज कलरलेस, ओडरलेस, इट इज द लाइटेस्ट गैस, it is difficult to liquefy, it is combustible but does not support combustion, neutral। अभी बेटा एक और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। यू आर गिवन टू टेस्ट ट्यूब, ओके, इन बोथ यू आर इंट्रोड्यूसिंग अ फ्लेम, one burns quietly with pale blue flame and one burns what beta with pop sound. So which one is pure hydrogen and which one is hydrogen air mixture or impure hydrogen? तो बेटा प्योर हाइड्रोजन होगा तो बेटा क्या होगा बोलो, बर्न्स क्वाइटली विथ पेल ब्लू फ्लेम। And if it is hydrogen air mixture, then it will burn with pop sound। क्लियर है? ये तुम लोग को स्कूल में सारे यूजेस है कि कितना यूजेस दिया है बेटा? चलो बेटा मैं बता ही देता अभी, चलो। हाइड्रोजन इज यूज एज अ फ्यूल। बेटा कोई भी चीज फ्यूल यूज होता है, व्हाई? बिकॉज कंबशन ऑफ हाइड्रोजन इज हाईली एक्सोथर्मिक, राइट? दिस आंसर विल राइट। व्हाई इट इज यूज इन meteorological balloon? Because it is lighter than air, but now it has been replaced। Name the gas by which now hydrogen has been replaced. It is replaced by helium। Why? Because hydrogen is inflammable। Okay, it is used in manufacture of ammonia, HCl, water, and hydrogen sulfide। Clear? Whenever you write this reaction of ammonia, you should know the temperature, pressure, catalyst, and promoter। Here, beta, we have to take which light? Diffuse sunlight। What will happen if you take direct sunlight? Reaction will become explosive। These two reactions are exothermic। Beta, here they can ask you, write a reaction in which hydrogen reacts with yellow non-metal। So this is yellow non-metal to give you rotten X smell gas। What is the color of the gas? What is the odor of the gas form? Rotten X smell। Clear? Okay। Then it is used in hydrogenation of oil। Oil से घी बनाते, वनस्पति घी। And that property, we use this in presence of what beta? Hydrogenation of oil. Like catalyst, like they may ask this, what is occlusion? Certain element like platinum, nickel, gold has a property to adsorb। Adsorb मतलब उसके surface पे वो adsorb कर लेगा, चिपकेगा। Okay, hydrogen in large volume, this property is called as occlusion। This is used in hydrogenation of oil। Vegetable oil से हम लोग घी बनाते, वनस्पति घी। Clear? Then beta, if coal के अंदर if I add hydrogen, then it will give you almost high fuel, like it will give you product which is similar to petrol। Then in extraction of metal, hydrogen is used as a reducing agent। बेटा it is reducing zinc oxide to zinc। फेरिक मेटल ऑक्साइड को मेटल में रिड्यूस करता है, मेटलर्जी में reducing agent। Very important. It is used in beta flame, which is used for welding and cutting। What is the flame? Why it is used in welding and cutting? Because hydrogen oxygen mixture on burning is exothermic and how much temperature it produces? ऐसा भी MCQ आएगा, 2800 degree, which it makes it useful for welding and cutting। Then beta we go to the another part, that is agents। So beta in agent beta what all thing you should know? What is oxidation and reduction? First, understand in terms of this thing. Addition of oxygen is oxidation. Removal of hydrogen is oxidation. Leo, loss of electron is oxidation. But best thing is what beta? Increase in charge is oxidation। What is reduction? Addition of hydrogen, removal of oxygen। Here it was loss of electron. Here it will be gain of electron। Here it was increase in charge. Here what will remember? Decrease in charge। Now, what about the agent? Remember, beta, the one who undergoes oxidation. Now, look, beta, look, this is the number line you will follow। If I go on number line on the right hand side, then it is what? Oxidation. Means in any reaction, if my charge is increasing, then I am undergoing oxidation। But if in any reaction my charge is decreasing, then I am undergoing reduction। Clear? Now, what type of question they will ask here? Okay, so I'll give you the question. Suppose beta, acha, you have to remember beta, whenever a lone atom is there, then atom has how much charge? Beta, zero।
Okay, now if I give you this type of reaction, in this sodium becomes what beta? Na1 plus electron. Okay, chlorine plus electron becomes Cl1 minus. Then I'll tell you whether it is oxidation or reduction. So what you'll see beta? सोडियम अकेला है, अकेले पे क्या चार्ज है? जीरो. डोंट लुक एट इलेक्ट्रॉन, यू विल गेट कंफ्यूज्ड. यहाँ पे देखो क्या लिखा है? +1. तो नंबर लाइन में व्हाट इज हैपनिंग? चार्ज इज इंक्रीजिंग ना बेटा. सो इट इज अंडरगोइंग विच प्रोसेस? ऑक्सीडेशन. क्लोरीन अकेला होता है तो जीरो, एंड दे हैव गिवन 1 माइनस. तो ये जीरो से -1 हो रहा है, तो चार्ज इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? डिक्रीजिंग. सो देयरफॉर इट इज विच रिएक्शन? Reduction. Clear? Suppose if I give you this reaction, Fe3 plus gives you Fe2 plus. So what will happen, Boto? Tell me. Don't look at the electron, look at the charge. Reactant side में charge देखो और product में +3 से +2 हो रहा है, तो it is decreasing ना, so it is charge is reducing, so it is what? Reduction. Clear? Suppose if I give you this reaction. So here you see what is the charge on this side. Here it is 3 plus. एरो के इस तरफ देखना है, तो नाउ चार्ज इज इंक्रीजिंग, देयरफॉर इट इज प्रोसेस ऑक्सीडेशन. क्लियर? Then beta they will ask you about the agent. So beta look, I have given all these reaction. Have you all understood what type of reaction are this? Clear? Yes, sir. Okay. Now beta we go to the next part. Now always remember beta, look, I gave you this is very important beta. Suppose beta I am bank, you are customer. आपको लोन चाहिए था, तो मैंने आपको क्या दिया? पैसा दिया. अब पैसे को हम लोग किससे रिप्लेस करेंगे बेटा? इलेक्ट्रॉन से. तो मैंने पैसा लूज किया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो आई एम अंडरगोइंग व्हाट? ऑक्सीडेशन. प्रोसेस इज ऑक्सीडेशन. आप लोग कस्टमर थे, आप लोगों ने पैसा गेन किया, इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो यू आर अंडरगोइंग रिडक्शन. बेटा लेकिन अगर आप लोग होते ही नहीं तो मैं ऑक्सीडेशन में जा पाता? तो यू आर ब्रिंगिंग माई ऑक्सीडेशन, सो यू आर विच एजेंट बेटा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. मैं होता ही नहीं तो आप लोगों का रिडक्शन हो पाता क्या? नहीं. तो मैंने आप लोगों का रिडक्शन करवाया, तो आई एम व्हाट बेटा? रिड्यूसिंग एजेंट. ऑलवेज रिमेंबर वेरी सिंपल थिंग. The one who undergoes oxidation will be reducing agent. The process is the one who is undergoing reduction, then it will be which agent? Oxidizing agent. Clear? Now the reaction in which beta both reduction and oxidation takes place simultaneously, we call them as which reaction? Redox reaction. क्लियर? वी कॉल देम एज व्हाट बेटा? रिडॉक्स रिएक्शन. तो बेटा मैं तुमको बताऊंगा, ये सब एजेंट वेजेंट बाद में करेंगे बेटा, हम लोग को पहले ना. हाँ, ये याद रखो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. मेटल अंडरगोज ऑक्सीडेशन बट दे एक्ट एज विच एजेंट? रिड्यूसिंग एजेंट. नॉन मेटल अंडरगोज रिडक्शन. मेटल लूज करता है ना इलेक्ट्रॉन बेटा, राइट ना बेटा? तो अंडरगोज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट इट इज रिड्यूसिंग एजेंट. नॉन मेटल अंडरगोज विच प्रोसेस? नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ना बेटा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जर्मनी, रिडक्शन, बट इट विल एक्ट एज विच एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ठीक है? फिर आपको कभी कभी ये लोग पूछेंगे बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के एग्जांपल याद रखो. तो बेटा देख, नॉन मेटल तो सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मेटल रिड्यूसिंग एजेंट. ठीक है? अगर लिक्विड फॉर्म में ऑक्सीडाइजिंग बोलेगे ना, तो याद रखना प्रॉपर एसिड होगा, कॉन्सेंट्रेटेड, पूरा एसिड है, फुल एसिड इट इज कॉन्सेंट्रेटेड. यहाँ पे फुल एसिड नहीं है, देखना बेटा, यहाँ पे हेलोजन एसिड, ऑल हेलोजन एसिड आर रिड्यूसिंग एजेंट. और इम्प्रॉपर इनकम्प्लीट एसिड, नाइट्रस, सल्फरस. बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है. नेम ओनली ऑक्सीड रिड्यूसिंग एजेंट विच इज अ बेसिक गैस. अमोनिया. नेम अ रिड्यूसिंग एजेंट विच इज अ रोटनेक स्मेल. नेम अ सॉल्ट विच इज इन द सॉलिड स्टेट एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. KNO3 NaNO3. अब बेटा आपको एग्जाम में बेटा ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है. डन डन. देखो बेटा, आपको ना एग्जाम में ना ऐसे क्वेश्चन आएंगे, तो उसको कैसे सॉल्व करना है वो आपको मैं बता देता हूँ. चलो बेटा, मैंने अगर ऐसा रिएक्शन लिख दिया है तो क्या है बोलो बेटा?
आई कैन आस्क यू 6 थिंग्स। कभी भी याद रखना बेटा, एजेंट विल बी ऑलवेज ऑन द रिएक्टेंट साइड। एजेंट जो तुम्हारे होगे ना वो रिएक्टेंट साइड में ही होगा बेटा। दिस इज योर प्रोडक्ट साइड। नाउ टेल मी बेटा, सोडियम पे क्या चार्ज है? अकेला मेटल है, मेटल पे क्या है होता है बोलो? जीरो। दिस इज ऑल्सो जीरो। सोडियम क्लोराइड में सोडियम पे क्या चार्ज होगा बोलो बेटा? +1। क्लोरीन पे क्या होगा? नाउ टेल मी हु इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, किसका चार्ज बढ़ा बोलो? तो सोडियम का चार्ज बढ़ गया तो हु इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन? Na। जो ऑक्सीडेशन में जाता है वो एजेंट कौन सा होता है? रेड्यूसिंग, तो Na। क्लोरीन का चार्ज कितना था? जीरो। जीरो से क्या हो गया? -1। सो इट हैज इंक्रीज और डिक्रीज? डिक्रीज। अच्छा बेटा मैं एक शॉर्टकट बता था, एक जन ऑक्सीडेशन में गया तो बाय डिफॉल्ट दूसरा रिडक्शन में जाएगा। तो क्लोरीन इज रिडक्शन एंड द वन हु इज अंडरगोइंग रिडक्शन, इट इज विच एजेंट बेटा? ऑक्सीडाइजिंग। एक किसी एक का भी रिएक्टेंट में ढूंढ लिया तो बाकी अपोजिट होगा कि नहीं बोलो बच्चे लोग? अच्छा ये रिएक्शन में एक ही प्रोडक्ट है, दिख रहा है कि नहीं? तो दोनों प्रोडक्ट में एक ही जन आएगा बेटा। समझा क्या बेटा? ये 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा। क्लियर है? नाउ बेटा, इफ आई गिव यू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, हाउ यू आर गोइंग टू डू इट? ऑक्सीजन दिया रहेगा तो बेटा बहुत इजी हो जाता है डायरेक्टली। यहां से यहां पे जा रहा है तो इसमें क्या हो रहा है? कॉपर ऑक्साइड में से देख कॉपर बन गया बेटा, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है कि नहीं? ऐसे भी हम लोग कर सकते थे, देख ना। यहाँ पे एक का -2 होता है तो कॉपर का +2, यहाँ पे कॉपर अकेला है 0, तो देख +2 से 0 हो गया कि नहीं? या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ कि नहीं बोलो बेटा? सो इट इज अंडर गोइंग वॉट बेटा? +2 से 0 हो गया, कम हो गया। सो कॉपर ऑक्साइड इज अंडर गोइंग रिडक्शन। बेटा अगर ये रिडक्शन में जा रहा है तो एजेंट कौन सा होगा? ऑक्सीडाइजिंग। अच्छा ये बेटा रिडक्शन में जा रहा है ना पूरा कंपाउंड लिखने का, तो ये किस में जाएगा? ऑक्सीडेशन में। कॉमन सेंस है, देखना बेटा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है कि नहीं बोलो? देखना। तो हाइड्रोजन इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, बट द वन हु अंडरगोज ऑक्सीडेशन, इट इज विच एजेंट? रेड्यूसिंग। अब देखो इसमें ये प्रोडक्ट पूछा है तो प्रोडक्ट में विल लुक इनटू दिस प्रोडक्ट साइड। Okay, so this was what my beta, this was my reduction, this was what my beta oxidation. तो who is my reduced product? प्रोडक्ट पूछा है तो कॉपर इज माय reduced प्रोडक्ट। ऑक्सीडेशन के राइट हैंड साइड में कौन आ रहा है? वाटर, सो वाटर इज माय ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट। इजी। हेलो। ओके, देन बेटा एक क्लोरीन वाला था कहाँ पे? चलो मैं अभी एक क्वेश्चन देता, तुम लोग आंसर बता दो इसमें। Excuse me. Oh my God, look here, but what we have here, SnCl2 plus HgCl2 gives me SnCl4 plus Hg2Cl2। तो कैसे करोगे ये बैलेंस करने के लिए पूरा? चलो now you have to tell me बेटा, who is undergoing oxidation, who is undergoing reduction, who is oxidizing agent, who is reducing agent? Think and tell me। कम ऑन, कैसे करोगे? मैंने बताया था ना ट्रिक। चार्ज देखने का। अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो टेंशन मत लो। एक क्लोरीन का -1 होता है तो दो क्लोरीन का कितना हो जाएगा? -2, तो इसका कितना हो गया? +2। यहाँ पर देखो एक का -1 है तो -4, तो इसका कितना हो गया? +4। तो देखो चार्ज बढ़ गया। अभी एक का ढूंढ लिया ना तो बाकी में टाइम वेस्ट मत करना। यहाँ पे चार्ज क्या हो रहा है बोलो बेटा? बढ़ रहा है कि कम हो रहा है बोलो?
अरे नंबर लाइन में +2 से +4 हो गया तो इट इज प्रोसेस, विच प्रोसेस? ऑक्सीडेशन। तो हुई इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, खाली SN+2 मत लिखना, पूरा कंपाउंड का नाम लिखने का। तो SnCl2 इज अंडरगोइंग व्हाट बेटा? ऑक्सीडेशन। जो ऑक्सीडेशन में जाता है वो कौन सा एजेंट होता है? रिड्यूसिंग। अच्छा बेटा, ये ऑक्सीडेशन में जा रहा है तो ये अभी किस में जा रहा है? रिडक्शन में। आप बोलोगे लेकिन गया कैसे, वो तो बताओ। मैं बताऊँ क्या? ये देख, एक क्लोरीन का -1 तो दो का -2, तो इसका कितना हो जाता है? +2। यहाँ पे बेटा एक क्लोरीन का -1 तो दो का -2, तो इसका +2। लेकिन ये दो मर्क्यूरी है तो एक का कितना हो जाएगा? +1। तो ये +2 से +1 हुआ कि नहीं, बोलो बेटा? Who is undergoing reduction? HgCl. And it will be which agent? Oxidizing. ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट बोला। प्रोडक्ट में, ऑक्सीडेशन के प्रोडक्ट में राइट हैंड साइड में कौन है बे? SnCl4। और रिडक्शन के राइट हैंड साइड में कौन है? Hg2Cl2। क्लियर? अब किसी को कोई डाउट है तो बोलो, मैंने पूरा चैप्टर रिवाइज करा दिया है। किसी को क्या डाउट है पूछते जाओ। हेलो, एनीवन हैज एनी डाउट? अरे से यस और नो। अरे कोई कुछ बोलेगा नहीं? हाँ सर। किसी को किसी में कोई डाउट है? क्रेशियस, रिदान, अमन, ऋषिता, क्षितिज, श्रिया, बोलो कोई डाउट है किसी को? मल्लार, गार्गी, आयुष जोटे, धुलप, अरे अम्मान, किसी को कोई डाउट नहीं है? तो शैल आई एंड द क्लास? हेलो, अरे कुछ आवाज आ रही है कि नहीं मेरी? हेलो, अरे कुछ थम्स अप बम्स अप टाइप तो करो, मैसेज कुछ तो बोलो। सर नहीं है मैंने डाउट। ऑडिबल और नॉट? सर नो नहीं है डाउट। सर डाउट, नो नो सर। डाउट ना? चलो देन, बाय बाय एवरीबॉडी, ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो।